everybody. In this video, we are continuing our chapter manufacturing industry. This is the part third of our video. In this first of all, we are going to start with the topic distribution of major industries. The major industries which you will read about this in this lesson are iron and steel industry, core and textile industry, and the information technology industry. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसको आयरन स्टील बेस देती है सारी इंडस्ट्रीज को. इसको बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं इस करके, ठीक है. और इसको फीडर इंडस्ट्री भी कहते हैं क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है दूसरी इंडस्ट्रीज को. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ अ हैवी इंडस्ट्री क्योंकि बल्कि रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं. आयरन और कोल लार्ज क्वांटिटीज में यूज़ किए जाते हैं, फिर प्रोडक्ट्स भी हैवी होते हैं, ठीक है. ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने एक मेजर रोल प्ले किया है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. ये मेटल वाइडली यूज़ किए जाते हैं टू मेक मशीन्स, टूल्स एंड वैरायटी ऑफ ड्यूरेबल गुड्स ऑफ डेली यूज़. और इसमें हमारे इनपुट्स क्या होती हैं? इनपुट्स होते हैं हमारे आयरन ऑल, कोल, लाइमस्टोन, मैग्नीज, लेबर, कैपिटल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. प्रोसेसेस क्या होती है? रिफाइनिंग आयरन ऑर एंड मेकिंग स्टील. आयरन ऑर इज यूज स्मेल्टेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस. आउटपुट क्या है? हमारी आयरन और स्टील आती है. द मोल्टन आयरन आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम आयरन और इज कूल्ड और मेल्टेड टू make pig iron. Pig iron बनाया जाता है. Iron is the form of steel and important due to its hardness, strength and durability. The production of steel हमारी 80 करोड़ टन्स है, ठीक है. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मेटल एल्यूमिनियम है वो सिर्फ 2 करोड़ टन्स ही प्रोड्यूस किया जाता है. The industrial revolution led to the rapid development of the iron and steel industry. This was due to the relatively low cost of the metal and its wider utility. Since the industries was used on bulky raw material, it was mostly in and around mining areas या जहाँ पे raw material could easily be bought, क्योंकि इसका raw material बहुत ज़्यादा होता है, bulky होता है. Many countries have developed iron and steel mills. Some of them have their own raw materials while other imported. US has a number of steel producing regions. USA में Alabama, Pittsburgh, Lake Erie region and Mid Atlantic states. यूरोप में यूके में, जर्मनी में, स्वीडन में, फ्रांस में, इटाली में, पोलैंड में, बेल्जियम एंड ऑस्ट्रेलिया have developed well developed iron and steel industries. एशिया में, चाइना में, जापान एंड इंडिया have developed this industry. Other important iron and steel producing countries हमारी क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, चाइल, अल्जीरिया, इजिप्ट, जिम्बाब्वे and South Africa. In India, most of the iron and steel mills are located close to the centers of raw material supply. These centers also have advantage of cheap labor supply and dense network of transport. ठीक है. The main centers of iron and steel are हमारे को जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, रूरकेला, बोकारो, कुल्टी, भद्रावती, सालेम, विशाखापट्टनम and Vijayanagar. The annual steel production in India में has increased from 1 million tons हमारी 1947 में 1 million tons थी और 215 में हमारी क्या है? 89.6 million tons, ठीक है. उसके बाद core and textile industry. The textile industry is one of the oldest industries of the world. The term textile means woven fabric. A variety of materials are used to make clothes. These materials are obtained from various sources जैसे plants, animals, chemicals. प्लांट्स में हमारी कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प आ जाती है. एनिमल्स में वूल और सिल्क. केमिकल्स रियॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर. कॉटन एक मोस्ट फेवरेट फाइबर है. हाउएवर ओवर द पास्ट 50 years सिंथेटिक फाइबर्स ऑल्सो बिकम पॉपुलर बन चुकी हैं, ठीक है. क्लॉथ फाउंड इन इजिप्टियन टॉम्स बैक डेट टू 5000 BC. क्लॉथ वॉज मेड फ्रॉम कॉटन इन इंडिया about 5000 years ago. और हमारे इंडिया में तो 5000 years ago ही शुरू हुए क्लॉथ बनना कॉटन से. मार्सो पोलो इन द 13th century had described the fine quality of Indian textile. मार्सो पोलो ने 13th century में एक्सप्लेन किया हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल की फाइन क्वालिटी को. कॉटन क्लॉथ वॉज मेड ऑन हैंडलूम्स बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हैंडलूम्स पे कॉटन क्लॉथ को बनाया जाता था. द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. Since the Industrial Revolution was due to series of invention in England and in the later half of the 18th century. Later half of the 18th century Industrial Revolution एक series of invention इंग्लैंड में हुआ और इधर आ गया, ठीक है. The flying shuttle was invented in 1733, followed by carding machine in 1748, spinning mule in 1799. The power loom run by water power and a steam engine was first used in 1785. ये हमारे सीरीज में बताया गया. From Britain, the techniques of textile spinning, weaving, dyeing, printing, and finishing spread to other parts of Europe, USA, China, India, Japan, and to the rest of the world.
ठीक है, इसमें सारी तरफ से स्प्रेड हुआ ग्रेट ब्रिटेन से। उसके बाद ड्यूरिंग द लास्ट 200 years द नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स हैव स्टेडीली ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टेडीली ग्रोन की जाती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कोरियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्ड इन USA, China, India, Russia, UK, Japan, Brazil, and Italy. In recent years, the Korean textile industry has shifted from the temperate regions of USA and Europe to the cotton growing areas. पहले तो temperate regions होते हैं USA and Europe, अब cotton growing areas में ट्रांसफर किए गए हैं, मतलब वहाँ से शिफ्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो चीप स्किल लेबर मिलती है, चीप पावर होती है, न्यू ऑटोमेटिक मशीन्स होगी और ह्यूज लोकल मार्केट्स आर early available. Before the British rule, Indian handloom cloth were in great demand. Handloom cloth भी बहुत great demand में थे before the British rule. The main varieties क्या थी? Muslin of Dhaka, chintz of Masulipatam, calico of Calicut. However, it could not maintain its position due to strong competition from the modern machine-made cloth of Great Britain. The first modern cotton textile was established in Mumbai in 1854. Since then, this industry has made rapid progress. At present, it's largest organized modern industry in India. Also, Korean textile mills are located in more than 80 cities of India. Most of them are Maharashtra, Gujarat, West Bengal, Tamil Nadu, Uttar Pradesh. Mumbai in Maharashtra is the largest center and is called the Contopolis of India. Next, we have last our information technology industry. Imagine करो कि एक पेरेंट कंपनी है कैलिफोर्निया में, उसकी कंपनी एक सब्सिडियरी कंपनी है मुंबई में। तो सीईओ को अभी उसको मिलना है, डिस्कस करना कोई इंपॉर्टेंट मैटर, ठीक है। तो क्या करेगा, वो आएगा, इतना टाइम नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या होती है, इससे टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन कम्युनिकेशन बिकम फास्टर एंड द सेविंग नॉट इन टाइम बट ऑल्सो मनी, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या एक साइंस है जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को यूज़ करती है ताकि वो मैनेज कर सके इन्फॉर्मेशन। इट इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग करती है, प्रोटेक्टिंग करती है, सिक्योरिंग करती है, स्टोरिंग करती है, रिसीविंग करती है, रिट्रीविंग करती है इन्फॉर्मेशन को। द कंप्यूटर मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड हार्डवेयर व्हाइल द प्रोग्राम दैट वी यूज आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। Information technology in the 21st century has enabled to transfer information एक जगह से दूसरी जगह। कम्युनिकेशन सिर्फ चीप ही नहीं बनाया, क्विकर और एक्सेसिबल भी बनाया। The introduction and use of high-tech application and gadgets like iTunes, iPods, Android, ये भी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी हो चुकी है। ई-कॉमर्स हैव गिवन रूम टू स्मॉल बिजनेसेस टू प्रॉस्पर। ई-कॉमर्स ने छोटे बिजनेस को प्रॉस्पर करने दिया। एजुकेशन रेवोल्यूशन हुई है, वर्चुअल लर्निंग आई है, VL इज इन्वेस्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग टूल्स आर डिजाइन यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, जहाँ से बच्चे एंगेज होते हैं इन वर्चुअल क्लास में, उनको मज़ा आता है। The use of IT in healthcare has positively affected the healthcare industry. The use of virtual healthcare teams, telemedicine, and electronic health records are a few examples that we use of IT in the healthcare sector. Information technology has brought phenomenal changes in all aspects of our life. Its impact is global as the IT industry continues to grow and develop. Ready? आपको भी पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज कितनी ज़्यादा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फैल रही है। न्यू आईफोन्स आते हैं, न्यू आईफोन्स आ रहे हैं, एंड्रॉयड के न्यू फोन्स आ रहे हैं, ठीक है। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।